పాటు ఈరోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ తెలంగాణలోని అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ 714 కోట్ల రూపాయలతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుకూలంగా ఈరోజు ఆ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ కూడా భూమి పూజ కొద్దిసేపటి తర్వాత ప్రధానమంత్రి చేయనున్నారు. అదేవిధంగా వచ్చేటువంటి 40 సంవత్సరాల వరకు ఎంతైతే ప్రయాణికులు పెరుగుతారో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ గా ఈరోజు సికింద్రాబాద్ ప్రజలకు, హైదరాబాద్ ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు, హైదరాబాద్ లో ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి అద్భుతమైనటువంటి ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు అందించారని మనం చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు 3,25,000 మంది ప్రయాణం చేసే విధంగా ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ అధికరించారు. అదే కాకుండా ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకు ఎవరైతే ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేస్తారో వాళ్ళకి ఇప్పటికీ సింగిల్ లైన్ మాత్రమే ఉంది, రైల్వే లైన్. దాన్ని డబ్లింగ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా గౌరవనీయులు ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజు 1,410 కోట్ల రూపాయలతో ఏదైతే రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ చేయడం జరిగిందో దాన్ని కూడా ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రజలకు అంకితం చేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ మీకందరికీ తెలుసు. అనేక రోజులుగా ఆ ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆగిపోయి ఉన్నది. ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందాలో అది అందని కారణంగా ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ పెరిగింది, దాని యొక్క బడ్జెట్ కూడా పెరిగింది. ఇటీవల ప్రధానమంత్రి గారిని ఈరోజు మా ఎంపీలందరం కలిసి, తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి ఎంపీలందరం కలిసి, బీజేపీ సంబంధించినటువంటి సంజయ్ గారు కానీ, బాబురావు గారు కానీ, లేక ధర్మపురి అరవింద్ గారు కానీ మేమందరం అడిగాము, సార్ హైదరాబాద్ కామన్ మ్యాన్ ట్రైను ఈ యొక్క ఎంఎంటీఎస్ ఉద్యోగస్తులు, కార్మికులు, వర్కింగ్ కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ప్రయాణం చేసి చాలా తక్కువ ధరతో ప్రయాణం చేయగలటువంటి ట్రైను, ఆ ట్రైనును మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేకున్నా కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పాము. అందుకోసం ఈరోజు 13 కొత్త ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను, ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ను ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అంకితం చేస్తా ఉన్నారని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా మేడ్చల్, బుల్లారం, ఉందానగర్, ఫలక్నామా ఈ ప్రాంతాలన్నిటి కూడా ఈరోజు మేలు జరుగుతుంది. అదే కాకుండా 7,864 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు జాతీయ రహదారులకు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు భూమి పూజ చేయబోతున్నారు. అది మహబూబ్నగర్ జిల్లా చించోలి ప్రాంతం కానీ, కల్వకుర్తి నుంచి కొల్లాపూర్ వెళ్ళే రోడ్డు కానీ, నిజాంపేట్, నారాయణ ఖేడ్, బీదర్ మధ్యలో రోడ్డు కానీ, ఖమ్మం, దేవరపల్లి 4 వరుసల గ్రీన్ ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి కానీ మొత్తము 7,864 కోట్ల రూపాయలతో ఈ జాతీయ రహదారులకు కూడా కొద్దిసేపటి తర్వాత భారత ప్రధానమంత్రి భూమి పూజ చేయనున్నారు. అదే కాకుండా ఎయిమ్స్ బీబీ నగర్ 1,366 కోట్ల రూపాయలతో కొత్త భవనానికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు. అది పూర్తయిపోతే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఆధునికమైనటువంటి వైద్య సహాయము మన తెలంగాణ ప్రజలకు అందుతుంది. అందులో ఆడిటోరియం కానీ, స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ కానీ అనేకమైనటువంటి నూతన భవనాలు అక్కడ ప్రారంభించుకుంటున్నాం. మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ రకమైనటువంటి భేదభావం లేకుండా అభివృద్ధి చేస్తా ఉంది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారుల కోసం 1,04,000 కోట్ల రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు జాతీయ రహదారుల కోసం ఖర్చు పెట్టారు. ఈ తెలంగాణలో 33 జిల్లాలుంటే 32 జిల్లాలకు జాతీయ రహదారులతో కేంద్ర ప్రభుత్వము రోడ్ల అనుసంధానం చేయడం జరిగిందని మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలలో కూడా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటిది నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఆకాంక్ష. అందుకే ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ఎన్ని రకాలుగా లాభం చేకూరుతున్నది కాబట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలు తెలంగాణ సమాజము ఈ విషయాన్ని గుర్తించి నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ప్రత్యేకంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతూ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. భారత్ మాతా కీ జై. Union Railways Communication, Electronics and IT Minister to address the gathering. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर सुंदरराजन गारू, केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी गारू, उपस्थित महानुभाव नमस्ते अंडी। आज सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया है। इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह तेलंगाना आंध्रा की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी सिकंदराबाद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। आज ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सिकंदराबाद से महबूब नगर के बीच 13 नई MMTS सर्विसेज को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। हमारे जितने भी कामगार भाई हैं, जितने भी मिडिल क्लास ऑफिस गोअर्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का संकल्प लिया है। आपके विजन में कई सारे आयाम हैं। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स, नई ट्रैक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, हर एक एस्पेक्ट रेलवे का सुधर रहा है। 2014 से पहले रेलवे में मात्र पूरे भारत के लिए 40-50 हजार करोड़ का बजट होता था। इस साल प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के बजट को बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ किया है। साथियों, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। साथ ही साथ तेलंगाना जैसे इतने महत्वपूर्ण राज्य के लिए 2014 से पहले क्या मिलता था? मात्र आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर मात्र 800 करोड़ रुपए। आज प्रधानमंत्री जी ने मात्र अकेले तेलंगाना के लिए 4,400 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए बजट दिया है। साथियों, तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर कदम पर हम आगे बढ़ेंगे। रेलवे में विकास के लिए राज्य सरकार का भी बड़ा सहयोग जरूरी होता है। लैंड एक्विजिशन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठे। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये समय है राज्य सरकार भी सबका साथ सबका विकास के इस मूल मंत्र पर आकर इसी भावना से आगे आए। एक बार फिर सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत के लिए तेलंगाना के सभी निवासियों का अभिनंदन। श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती का दर्शन अब और सुगम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंडी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। మనం ఎప్పుడెప్పుడా అని వేచి చూస్తున్నటువంటి క్షణం రానే వచ్చింది. వి నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద హిస్టారిక్ మూమెంట్. మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి దార్శనికతో చెప్పిన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ వంటి పథకాలతో ఈరోజు భారతదేశానికి ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. సుమారు 11,360 కోట్ల రూపాయల పైచిలుకు విలువగల రైలు, రోడ్డు మరియు ఆరోగ్య సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టుల్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో
నూతన శకం ప్రారంభం కానుంది. We will now see a short video on 5 important road projects in Telangana state. Foundation shall be laid by the Honorable Prime Minister in a short while. Can we have the AV please? It is a firm belief of our visionary and dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji that for developed India, modern infrastructure is pivotal. And in the last 8 to 9 years, the country has seen a transformation in infrastructure landscape of the country. भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के कोने कोने तक बेहतरीन कनेक्टिविटी पहुंचे। पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। Telangana, known for its rich cultural heritage and beautiful natural landscape, is a strong partner in nation building. Road infrastructure projects worth over rupees 34,000 crore have been either completed in the last 9 years or are in advanced stages of completion. Today is an important day in the history of Telangana as Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for 5 national highway projects worth rupees 7,865 crore. Construction of 4-lane new greenfield highway from Khammam to Devarapalle will reduce distance between Rajamundry and Hyderabad by 56 kilometers and provide direct connectivity between Hyderabad and coastal parts of Andhra Pradesh like Visakhapatnam, Gangavaram and Kakinada. It will also boost tourism by providing enhanced connectivity to places like Rajamundry, Papikondalu, Annavaram and Simhachalam. Construction of 6-lane Akalkot-Kurnool section of NH 150C will reduce the distance between Surat and Chennai by 280 kilometers and travel time by 6 hours. It will strengthen road connectivity of the state of Telangana with Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Construction of Mehboob Nagar Chincholi section will provide smooth connectivity with Karnataka. Local produce like cement, tandoor stones and agriculture commodities like red gram and cotton will get access to bigger and newer markets. It will also give boost to pilgrimage and tourism sectors due to seamless connectivity to Anantagiri Hills, which hosts the famous Ananta Padmanabha Swami Temple. Construction of Kalva-Kurti Kolhapur section of NH 167K will reduce distance between Hyderabad, Kalva-Kurti and important destinations like Tirupati, Nandyala, Chennai by about 80 kilometers. Small-scale industries, milk factories and stone quarries will get access to bigger markets, enhancing socio-economic development of the entire region. Construction of Nizampet Narayanakhed Bidar section will improve connectivity between Hyderabad and Bidar, famous for Guru Nanak Jira Sahib Gurudwara, Kolhar Industrial Area and handicrafts. These projects will give boost to agriculture, industrial, transport and tourism sectors and generate employment opportunities at a large scale, thereby giving new impetus to prosperity and growth of Telangana. Thank you, sir. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अब इस परियोजना का बटन दबाकर अनावरण करने की कृपा करें। కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఈ రోడ్డు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయ సందర్భంగా దానికి సూచనగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు శిలాఫలకాన్ని तस्मै देवाधिप्रवन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्ताने सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यतां फलसिद्धिरस्तु రోడ్డు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన జరగడం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి శుభ సూచకం. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू. ఆ తరువాత దేశంలో ప్రాంతీయ అసమానతలను నివారించడానికి నాణ్యమైన వైద్య విద్యం కోసం సౌకర్యాలను కల్పించి
తద్వారా సరసమైన మరియు విశ్వసనీయమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు అందించేందుకు ఉద్దేశించిన ప్రధానమంత్రి స్వాస్థ్య సురక్షణ యోజన బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ ని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించడం జరిగింది. The most prestigious All India Institute of Medical Sciences is being set up at BB Nagar, Telangana. This initiative comes as a boon to strengthen medical infrastructure in the state. We now present a short video on All India Institute of Medical Sciences, BB Nagar. Foundation shall be laid by the Honorable Prime Minister in a short while. Can we have the AV please? विकसित भारत के प्रण से सीधा जुड़ा है स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प. इसीलिए हेल्थ केयर फॉर ऑल के विजन के साथ पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कदम उठाए गए. ये 9 साल मजबूत हेल्थ केयर सेक्टर के निर्माण की दिशा में अभूतपूर्व रहे हैं. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीब को 5 लाख तक के इलाज की निश्चिंतता मिली है. जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती हो गई है. लाखों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और PM अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत हो रहा है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से डिजिटल भारत में स्वास्थ्य सेवाएं लेना सहज हुआ है. 2014 के मुकाबले आज देश में एम्स की संख्या 8 से बढ़कर 23 हो गई है. मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं. MBBS की सीट 51,000 से बढ़कर 1,01,000 से अधिक और PG की सीट्स 31,000 से बढ़कर 65,000 से अधिक हो चुकी हैं. सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और 200 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण देश के सामूहिक सामर्थ्य की मिसाल बना. बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है. हेल्थ और वेलनेस की दिशा में ऐसे ही तेज कदम बढ़ाते हुए आज एम्स बीबी नगर तेलंगाना की आधारशिला रख रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी. एम्स बीबी नगर का लाभ तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करोड़ों परिवारों को होगा. 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तरों वाले इस एम्स से सस्ती और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को आसानी से मिल सकेंगी. नए एम्स में होगी टर्शरी केयर की सुविधा. यहाँ न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आदि सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे. एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, पैरामेडिकल जैसे 40 से अधिक विभाग काम करेंगे. विश्व स्तरीय अत्याधुनिक लैब में होगी जांच. साथ ही साथ ये मेडिकल की उच्च शिक्षा और चिकित्सकीय अनुसंधान का केंद्र बनेगा. यहाँ आयुष विंग के साथ एकीकृत चिकित्सा प्रणाली होगी. 201 एकड़ के भूखंड पर 1,366 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स बीबी नगर को रिकॉर्ड समय में तैयार कर लिया जाएगा. एक और एम्स के साथ देश ने बढ़ाया है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की ओर एक और कदम. अभी हम अनुरोध करते हैं श्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये परियोजना को शंकुस्थापन करें बटन दबाकर. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बीबी नगर శంకుస్థాపన చేయు సందర్భం సూచికగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు శిలా పథకం ఆవిష్కరించుకున్న శుభ తరుణం. గట్టిగా చప్పట్లతోటి అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ సార్, ధన్యవాద్. మరి ఎంతగానో వేచి చూస్తున్నటువంటి రైల్వే ప్రాజెక్ట్. It is indeed a memorable moment for the people of Telangana that a host of railway projects are being launched by the Honorable Prime Minister. We now present to you a short video on the rail developmental projects in Telangana being launched by our Honorable Prime Minister in a short while. Can we have the AV please? Indian Railways holds a place of pride in every Indian heart, linking villages, towns and cities and strengthening the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. As the growth of Indian Railways is directly linked with the country's growth journey, our dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji emphasized on the transformation of railways. Railways is fast becoming modern, safer and inclusive with world-class infrastructure. आज के भारत में सबको गति,
और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रतीक है। आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है। Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, Government of India has provided significant railway facilities to the state of Telangana like upgradation of stations, new lines, electrification, doubling and tripling of lines, construction of bridges, road over bridges and road under bridges. Continuing these efforts towards strong rail connectivity for the people of Telangana, today Honorable Prime Minister is flagging off the prestigious Vande Bharat from Telangana, which will connect IT city of Hyderabad with the abode of Lord Venkateshwara Tirupati. It will further the economic, social and cultural activities in the entire region. Indigenously built semi-high-speed Vande Bharat Express will enhance the travel experience of passengers by providing a safe, fast and comfortable rail travel between Hyderabad and Tirupati while reducing travel time by almost 3.5 hours. Facilities like 180-degree rotating recliner chairs, automatic doors, Wi-Fi, Kavach, specially designed toilets and touch-free services will give world-class travel experience to passengers. Taking rail services closer to suburban rail users, 13 new MMTS services are being introduced in the suburban section of Hyderabad-Secunderabad Twin City region. These services will provide fast, comfortable and cost-effective travel to daily commuters. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is also dedicating to the nation 85-kilometer of rail line doubling with electrification project of Secunderabad Mehboob Nagar section worth rupees 1,410 crore. It will not only decongest this highly saturated section and give seamless connectivity, but will also help in increasing train speed as well as facilitate introduction of more train services. This vital project will strengthen the connectivity of Hyderabad and Secunderabad with Kurnool, Anantapur, Tirupati and Bengaluru. Prime Minister Narendra Modi ji is also laying foundation stone for the redevelopment of Secunderabad station with modern architecture and world-class amenities at a cost of rupees 720 crore. The new station would have iconic buildings, spacious air concourse, separate entry and exit, lifts, escalators, travelators, easy signages, multi-level parking, food courts and modern public announcement and information system, thereby enhancing passengers' convenience. These railway projects will give boost to agriculture, industrial and tourism sectors in the state and propel Telangana to new heights of development. Thank you, sir. Thank you very much. That is a detailed video about the railway projects. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन हमारे सिकंदराबाद के पुनरुद्धरण के लिए शंकुस्थापन करें बटन दबाकर गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गारू सिकंदराबाद రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు శంకుస్థాపన చేయు సందర్భంగా శిలాఫలకం ఆవిష్కరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాం. అదే మాదిరిగా మరొక ప్రాజెక్ట్ సికింద్రాబాద్ మహబూబ్ నగర్ డబ్లింగ్ మరియు విద్యుద్దీకరణ ప్రాజెక్ట్ శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా అలాగే జాతికి అంకితం చేయవలసిందిగా సవినయంగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని విన్నవించుకుంటున్నాము. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से महबूब नगर सिकंदराबाद डबलिंग लाइन का आविष्करण करें रिमोट दबाकर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हैदराबाद सिकंदराबाद
జంటనగర ప్రాంతంలోని సబర్బన్ విభాగంలో 13 కొత్త ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులకి జెండా ఊపి ప్రారంభించబోతున్నారు గౌరవనీయులు మన ప్రధానమంత్రి. I now request our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to flag off the MMTS services in the suburban section of Hyderabad and Secunderabad Twin City region. अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी फ्लैग ऑफ करके आविष्करण करें. గట్టిగా చప్పట్లతోటి మనందరం అభినందనలు తెలియజేద్దాం. ఈశ్వరీ సర్వభూతానాం దామిహోపత్వయేశ్వరో కామమాగో సత్యమశీమహే పశూనాం రూపమన్యస్య మహేశ్వేషయతాం యశః కర్తవేణ ప్రజాభూతామయ సంభవకర్తమా. రైల్వే ప్రాజెక్ట్ ఆవిష్కరించారు గౌరవనీయులు మన ప్రధానమంత్రి వర్యులు. भारत को महान बनाने का विजन, समग्र विश्व को एक परिवार बनाने हेतु वसुदैव कुटुंबम विचार की प्रतिबद्धता केवल ऐसा व्यक्ति ही सोच सकता है जो स्वार्थ से परे हो, और ऐसे ही व्यक्तित्व है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. ये भारत को महान बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है कि आज समग्र विश्व को भारत में आशा की किरणें नजर आ रही है और सभी देश इस राष्ट्र के साथ मित्रता स्थापित करने हेतु लालायित है. विश्व का सबसे जीवंत लोकतंत्र आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्वावलंबी बनाने की राह पर अग्रसर है, तो यह वैश्विक नेतृत्व में शीर्ष स्थान प्राप्त उस नेता की दूरदर्शिता का ही परिणाम है, और वे है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. अब हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस शुभ अवसर पर हमें संबोधित करें. భారతదేశాన్ని మరింత మహోన్నతంగా రూపుదిద్దుతున్న ప్రధానమంత్రి గారిని సంభాషించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుతున్నాము. भारत माता की तेलंगाना की गवर्नर तमिल साई सौंदर राजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, इसी तेलंगाना की धरती के पुत्र और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियమైన సోదరా సోదరి మణులారా, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వक నమస్కారములు. महान क्रांतिकारियों की धरती तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम. आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला. थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है. ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी. यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था,
आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। इसके साथ ही आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं। तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एमएमटीएस प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है। आज भी यहां 13 एमएमटीएस सर्विस शुरू हुई है। एमएमटीएस का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और 2 देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत
21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है, वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अक्कलकोट कर्नूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूबनगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। टेक्सटाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मजदूर को भी, दोनों को बल देता है। हमारी सरकार ने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना तय किया है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार के साथ साथ तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी
केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था विकसित की है। आज किसानों को, विद्यार्थियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा
सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके 3 मतलब सकते थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो। ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भाई और बहनों, जब सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था। यही तो संविधान की सच्ची भावना है। जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम आया, ये पूरा देश देख रहा है। बीते 9 वर्षों में देश की 11 करोड़ माताओं, बहनों, बेटियों को इज्जतघर टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी 30 लाख से अधिक परिवारों की माताएं, बहनों को भी ये व्यवस्था मिली है। बीते 9 वर्षों में देश में 9 करोड़ से अधिक बहनों, बेटियों को उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। तेलंगाना के 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। साथियों, परिवार तंत्र तेलंगाना सहित देश के करोड़ों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था।
हमारी सरकार में आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तेलंगाना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तेलंगाना के लाखों गरीब साथियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जनधन बैंक खाता खुला है। तेलंगाना के 2.5 लाख छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी का मुद्रा ऋण मिला है। यहां 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए भी मिले। ये वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार वरीयता मिली है, प्राथमिकता मिली है। साथियों, जब देश तुष्टीकरण से निकलकर सबके संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ता है, तब सच्चा सामाजिक न्याय जन्म लेता है। आज तेलंगाना सहित पूरा देश संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलना चाहता है। सबका प्रयास से विकसित होना चाहता है। आज भी तेलंगाना को जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो संतुष्टीकरण की भावना से प्रेरित है, सबका विकास के लिए समर्पित है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए तेलंगाना का तेज विकास बहुत जरूरी है। आने वाले 25 साल तेलंगाना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के लोगों को तुष्टीकरण तथा भ्रष्टाचार में डूबी हर ताकतों से, ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगाना के भाग्य को निर्धारित करेगा। हमें एकजुट होकर तेलंगाना के विकास के सारे सपनों को पूरा करना है। इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार फिर तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत संतोष की बात है, इतनी बड़ी तादाद में तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
కానీ టైం ఎక్కడ ఉంది? అందుకే బ్రో ఈ బీ కనిపిస్తే బీతో బోలెడన్ని స్లైడ్స్ తో పీపీటీలు తయారు చేస్తూ, బీతో బోర్డ్ రూమ్ మీటింగ్స్ లో నిమిషాలు వృధా చేస్తూ, లేదా బీతో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ లో బండ్లు తింటూ కరెంటు, మొబైల్, బ్రాడ్బ్యాండ్, డిటిహెచ్ ప్రతి బిల్లు కట్టండి బీపై పూర్తి నమ్మకంతో. ఎందుకంటే ఇది భారత్ బిల్ పే బీ. ఇది సాధ్యం చేయిస్తుంది భారతదేశపు ప్రతి యువ మనసు బిల్ పేమెంట్. మీ పేమెంట్ యాప్, బ్యాంక్ సైట్ లేదా దగ్గరలోని దుకాణం నుంచి. భారత్ బిల్ పే. Autonomy. He has defined it, underlined it, and headlined it. Please welcome Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs. And he will be in conversation with the CNN News 18 Zaka Jacob to shine light on what is India's G20 moment. Namaste, Dr. Jaishankar. Thank you very much. Very much for joining us here on Rising India. The last time we spoke was in June of last year at the CNN News 18 Town Hall. You've become an even bigger rock star on social media and on traditional media since then. But let's talk brass tacks. Last June when we last spoke, the Russia-Ukraine war was just 3 months in. Now it's over a year. Did you expect this war to continue this long? And how has it changed global geopolitics? How has it changed your job in the last year? Well, it was, I don't think it's a fair question to say, did you expect something to happen or not? Because a lot of people didn't expect the conflict to happen at all. But many things have changed, many things have changed because the West has changed. Definitely, Europe has changed. Russia's relationship with the West has changed. I think that has other consequences. My sense is Russia's relationship with Asia will consequently change because it will turn more eastwards than it has done in its history for a long time. In many ways, issues like energy security, food security have come to the fore. It's also opened up a bit of a north-south divide. So at the moment you have a east-west friction and a north-south divide. So it's really made the world a much more difficult place. So when you say the world has become a much more difficult place, a country like India, we are the voice of the global south. We also have very deep linkages with the West and of course with the East. How does India play these deep divisions? Well, we are to a great extent the voice of the global south because I think, one, there is a natural empathy from our similar history, but also because we have made an effort. I mean, it's not something which just happened by itself. You've had G20 summits before. To the best of my knowledge, no other country said, okay, we are 20 countries around the table. There are 180 countries which are not around this table. So should we make an effort to find out what their expectations are of us? I think, to the best of my knowledge, we are the first country to have done that. And we actually, starting with Prime Minister himself and, 5 of us, including Piyush was here before me, we all spoke to our counterparts. We actually consulted 125 nations with this one question, which is we're going into G20, so tell us your key concerns and what is it we can articulate. That's one part of it. I think the other part of it is also we have in this whole period since February 24th last year, we have tried to press for you can say a return to peace, a return to negotiations. Yeah. In that sense, we have taken an independent position. I wouldn't say we're the only ones, but we certainly are among the more prominent ones.
I do believe there is a real body of opinion out there, including in the G20. I would say a country like, say, Mexico or Brazil or Argentina or Indonesia, Saudi Arabia. I think many of them share similar views. Probably we've been the more outspoken among them. Both in terms of the north-south divide as well as the east-west polarization, I think we have tried to be the bridging force there. The world needs somebody like us. So you're talking about the G20, and of course, this is a big year for India. The session is called India's G20 moment. But how worried are you that there's so much fixation around a joint statement or the lack of it at the end of one? Because we had the foreign ministers meeting, you chaired that a few weeks ago. We had an outcome document, I believe, not a joint communique. Similarly, again, in the finance ministers meeting. Is there too much fixation on a joint statement? Well, let me speak about the one which Sure. I chaired. We had a meeting. We had a outcome. We were negotiating essentially a 24-paragraph document. We had agreement on 22 paragraphs. There were 2 paragraphs pertaining to Ukraine, which basically was a carry forward of what happened at Bali, on which we could not get agreement. So, in a sense, we had to do a chair summary for the part we couldn't, and the outcome document for the part we could. Now, we have to be real about it. I mean, look at the state of the world. In this state of the world, if I could get 22 out of 24, so what's that in percentage terms? About 95. 95%, okay. I never got 95% in school. So I would say, I was not dissatisfied. I would have obviously liked to get 100%, which would have been a novel experience for me. But you were one of your toppers in the services. You went to a top university. Well, we'll put that aside. We'll park that aside. No, but look, my point is, what we really managed to do in the G20. I agree with you that one shouldn't be textually obsessed, though text does matter. Sure. I think our real contribution was to get the G20 back to the G20's real business. The G20 is not the UN Security Council. It's not the primary forum to debate international peace and security. I'm not saying international peace and security doesn't matter or doesn't have economic consequences. They do. But if you look today at the world, there are 6 issues for the world to worry about. Food and energy security, green financing, Agenda 2030, trade issues, debt issues. We actually got something very novel for G20 to look at, and which I would like to build on, which is something called global skills mapping. That where are the skills in the world and where is the demand in the world? And they are in 2 different geographies. Yeah. So how do we actually put that together? I think that's a very interesting avenue that we have opened up for the G20. So the original mandate of the G20 was global growth and development. Now last year, because of the Ukraine conflict, I think the conversations went in the direction of one issue. We would like to see, without disrespecting that particular issue, we would like to see a return to what we believe matters most to the roughly 200 countries of the world. And in that sense, I would say more than getting 22 out of 24. I would take satisfaction in the fact that the finance ministers meeting in Bengaluru and my meeting in Delhi, we were able to get the G20 back on track. So you're confident that in September, when the leaders meet, a bulk of the conversations will be around the issues that you just outlined? I would say, yes, that should be the progression. Every G20, there is a strong element of continuity. And there are some ideas new ideas which come in.
My sense is that you would see some ideas come in as well. Probably a bit early, may take a few meetings more for that to move. But I would certainly hope that by September, we would have a G20 leaders meeting which would look at the crucial issues pertaining to global growth and global development. Sure. So one of the consequences, I guess, because of the war, or perhaps it's been accentuated because of the war, is the world is increasingly looking like two blocks. You have the United States and its partners on the one side, and you have Russia and China on the other, most of all because of what happened last week when Xi Jinping went to Moscow. What do you make of that? And how, like, again, I come back to this, how does a country like India play that? Because we are in neither camp. I think you are oversimplifying this deliberately so, I understand. The journalist occupational yes, hazard. Yes, absolutely, I get that. I'll tell you why you're oversimplifying it. It's not, Russia and China versus the West in that simplistic a term. After all, the primary partner, economic partner of China is the West, and the primary economic partner of the West is China. So they have an enormous amount of economic interface there. Where Russia is concerned, I would actually go back to my initial point, which is, I think one of the natural consequences of the Ukraine conflict is that Russia, a Eurasian power which has historically looked much more towards Europe, today finds its relationships with the West very, very difficult. So that Russia is inclined in many ways, therefore, to turn much more to the Asian side of Russia. Yeah. So I would predict fairly safely, and I think the numbers this year already bear me out, that you will see an intensification in Russia's relationship with Asia as a whole. Now, you spoke about Russia, China, but I would suggest to you that many other countries in Asia, maybe not economically all of the same size, but there are some fairly consequential economies. We would number one of them. And my expectation is you will see actually Russia also show that much more interest in developing its cooperation with India. Now, if you look at the India-Russia relationship, for the last 70 years, this has been one of the most steady relationships in international relations. That, take all the major players, Russia, China, Russia, West China, you've seen enormous volatility in their relationship. Whereas from 1955, which was the year Bulganin and Khrushchev came to India, you've actually had a very, very steady, even after the breakup of the Soviet Union, actually, there was a bit of a gap there, but very quickly the relationship came back to where it was. So I do think that, yes, you will see a change in Russia's posture and priorities, but I think for India, this is also in many ways an opportunity to grow its relationship, because our relationship with Russia has been very, the bandwidth is very narrow. It's mainly natural star. One of the best performance today is this song. ఏదో ఒక రోజు నాకు నువ్వు పాడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. It has been made. Relationship with Russia historically has been very, not historically, at least in the last 2-3 decades, has been very, very narrow, and you can see that grow. So, but when now
particularly when European countries say that, before the start of the war, Russia was supplying India less than 1% of your oil requirements. Suddenly, Russia is your top oil supplier. What do you say to that? I'd say the market is the market. We all believe in markets, right? Of course. So let's talk a little bit about domestic politics as well, because as you said some time back, there's a lot of interest outside about domestic politics, and of course in India also there's a lot of interest about what's happening around the world. Your parliamentary colleague, Mr. Rahul Gandhi, the leader of the Congress party, he made some comments while he was abroad. There was a backlash to those comments. Your party basically wanted him to apologize, and then subsequently now there's a court conviction and he's been disqualified. I want to know your... Sorry, the two are not related. The two are not related. Fair enough. I'm just so that we are a clear. chronological order of what's happened with Mr. Gandhi over the last couple of weeks. I want, first of all, your reaction to the disqualification and what the opposition is saying, that, look, this sort of proves what we've been saying all along. The Modi government is illiberal. It's an electoral autocracy. Opposition's not being allowed to talk. How would you respond to them? So let's assume I have a counterpart or a colleague, or I go abroad and somebody asks me what you're asking. How would I put it? I mean, that's essentially what you're asking me. I guess I would say that 4 years ago, Rahul Gandhi was disparaging of a community in a public meeting. It's not me saying it, it's on record. A member of that community took offense and began legal proceedings. Rahul Gandhi had an opportunity of rectifying the situation, of expressing regret. He chose not to do so. The legal proceedings then produced an outcome. The outcome triggered a law which I would remind you, Rahul Gandhi himself had, in a way, supported some years ago. A law that has been applied, I think, to about 10, 12 other elected representatives, including of the ruling party. So my answer to somebody who asked me this would be the law is the law. Unless somebody thinks the law is not the law for them. I mean, that's... Has anybody asked you this? Have any foreign diplomats or governments asked you this? But if they do, this would be your answer. I'm practicing it on you, and if there is a... Nice to know that you've equated me to a foreign diplomat. But let's, because the reason I ask you this is because there are ramifications of what he's saying and the narrative that the opposition wants to build. You have been vehemently opposing that narrative that's been constructed, some of which has been fed into by some